Hello. Hello. Good morning, sir. Good morning, everybody. Happy Puja. So today we'll discuss. In the last class, we have discussed up to Sales of Goods Act. Today we'll discuss Factories Act. Factories Act. So right down. Today we'll discuss this Factories Act, Industrial Dispute Act, Workmen's Compensation Act, Employees Provident Fund Act, Payment of Bonus Act. So, and Minimum Wages Act. So these are very important from the point of view of exam. This will come as short questions. So Factories Act. So Factories Act 1948. It was envisaged in the year 1948. So according to this act, any place wherein 10 or more persons are working and where a manufacturing process is carried on with the aid of power supplied by steamroller or electricity is termed as a factory. If 20 or more persons are working in that premises in which power is not used, it can also be treated as a factory. जोठी सब पावर यूज करा जाउतिबो इलेक्ट्रिसिटी हो कि डिजिट सेट हो 10 जन लोक काम करूथिबे 10 जन रु अधिका ताकू आमे फैक्ट्री कहूचे जोठी पावर यूज हो नथिबो किंतु 20 लोक रु अधिका काम करूथिबे सो दैट इज आल्सो ए फैक्ट्री. Factories Act 1948 actually prohibit करूची. It prohibits a person to work in a factory if he is below 14 years. 14 वर्ष तळकु जदी हेतिबो ताकू आउ फैक्ट्री काम करिया पई दबा कथा नुहे किंतु लोक माने दउचंदी. The act reduces the hours of work for children between the age 14 to 17 from 5 hours to 4.5 hours per day, and also prohibits them to work at night. Women are also not allowed to work from 6 p.m. to 7 a.m. Remember, so if it is 6 p.m., then the women will not be allowed to work from 6 p.m. to 7 a.m. under the provision of the Act, Factories Act. And the working hours are reduced from 5 to 4 hours for women or 48 hours per week. So this is the Factory Act. This is the Factory Act. Any contravention of the provision of the Act, the owner and the manager of the factory shall each be guilty of an offence and be entitled for imprisonment for a term exceeding 3 months or with a fine of rupees 500 or with both. That is there. They can be imprisoned. So this is the Factory Act 1948. So Industrial Dispute Act, another act, write down Industrial Dispute Act. The Industrial Dispute Act. आपण जानिथिबे जे सबु दिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होउची. Lot of industrial disputes are there in the country. सेत ପାଇଁ कि हमर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रे हिची 1947 मसिया रे जेबे हम देश स्वाधीन होला आज तो गांधी जयंती October 2. The Industrial Dispute Act 1947 is an important act which aims at promoting harmonious industrial relations between the workers and the employees. Between the workers and the employees.
So the act applies to all industrial and commercial establishment employing one or more workers, except those who are employed in administrative and managerial positions. So please write down this. The Industrial Dispute Act 1947 is an important act. This aims at promoting harmonious industrial relationship between the workers and employees. The act applies to all industrial and commercial establishments employing one or more workers, except those who are employed in administrative and managerial positions. The administrative and managerial positions, तांका पे Industrial Dispute Act लागू होबनी. Only for workmen लागू होबो. So this much you write. Then there is Workmen's Compensation Act 1923. Write down. Workmen's Compensation Act. So this act aims at securing the payment of compensation by employers and personal inquiry caused to a workman by an accident arising out of and in course of his employment. Please write down this sentence, what I am speaking. So please write down. The Workmen's Compensation Act 1923. 1923 रे NBC जाइची. So write down. The act aims at जा डाकुची लिखी दियंतु. The act aims at securing the payment of compensation by employers and personal inquiry caused to a workman by accident. Jadi factory भितर accident hela arising out of and in the course of his employment कि बाहर को जाउची से employment भितर काम रे and in the course of his employment. I am repeating it again. The same thing I am repeating. Please remember, the act aims at securing the payment of compensation by employers and personal inquiry caused to a workman by an accident arising out of and in the course of his employment. The main provisions of the act are, write down, the main provisions of the act cover the following types of injuries. Following types of injuries. One rela death, two rela permanent total disablement. First rela death, two rela permanent total disablement, three rela permanent partial disablement, four rela temporary disablement, or total. The act also provides compensation for occupational disease. Jodi kichi occupational disease hala sei jaga re. The act also provides compensation for occupational diseases which are given in the Schedule 3 of the Act.
There are also provisions in the Act regarding the payment of compensation. There are also provision in the Act for payment of compensation, for appeal and obligations and rights of workmen and employees. And rights of workmen and employees. तेणुकरी compensation दबाकू बाध्य owner or employer. Workmen's compensation act under रे लोकड़ा मरी गले तापिंग compensation दबो लोकर permanent disablement हे गला पूरा disable हे गला तापिंग पैसा दबो compensation दबो permanent partial disablement हेले भी total disablement हेले भी दबो partial अधा disablement हेले भी दबो मनगर का खिकोड़ा हे गला किए अंध हे गला का गोड़ पूरा दीटा के भांगी गला हाथ दीटा कटि गला टेम्पोरारी डिसेबलमेंट हेले भी पार्शियल हेले कि टोटल हेले भी दबा को पड़िबो आ ऑक्युपेशनल डिजीज विभिन्न प्रकार डिजीज होची देहरे फटका आइ जाउची होची सी होची सेही गुरा हेले भी दबो तेणु करी द वर्कमेन्स कंपनसेशन एक्ट गोटे भला एक्ट जोटा कि वर्कमैन मैन को फैक्ट्री रे जे माने काम करचंदी ताका पई कि गोटे प्रोटेक्शन दउची सेकंड वन इज द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट एक्ट 1952 आ गोटे प्रोविडेंट फंड एक्ट अछि सेटा समस्त को दिया होची ऑफ कोर्स ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट एक्ट 1952 राइट डाउन द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 the act is a piece of welfare legislation like write down the act is a piece of welfare legislation. The act is a piece of welfare legislation. This aims at making provisions for securing in old age after the employee retires or for his dependent in case of his early death. पूरा एटा को लिखो ए लैंग्वेज लिखो the act is a piece of welfare or legislation full stop. This aims at making provisions for securing in old age after the employee retires or for his dependent in case of his early death. सबुठ इंपोर्टेंट जिनस है जोठी 20टा लोक रु अधिका काम करुथिबे सेही एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड दबा को बाध्य सब एम्प्लॉई की समस्त में प्रोविडेंट फंड देवे जे एम्प्लॉयर का सब एम्प्लॉई की दबो गवर्नमेंट दउची जो पीएसयूज गुडा का दउची प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन गुडा दउचंती छोटो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जदी 20 जन लोक रहिले भी से तांको प्रोविडेंट फंड दबा को बाध्य. दिस इज स्टैट्यूटरी वेलफेयर लेजिस्लेशन. एथिरे ईपीएफ एम्प्लॉयर रा कंट्रीब्यूशन रहिबो गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करिवो. कंट्रीब्यूशन ता 8.33 रु 10% बेसिक सैलरी रा वैरी करूची. एबे कोन ताको पुनी 12% करिवे कि भाबी चंदी मोदी गवर्नमेंट माने माने कर आपण जणे होचंदी फैक्ट्री ओनर आपण क पाखरे 20 जन लोक काम करचंदी आपण तांका बेसिक सैलरी समस्तंकर माने कर बेसिक सैलरी होची 10,000 से 10,000 रो 10% 1000 टंका सबु बेले सबु मासरे रखिबे आउ ताकू काउंटर पार्ट सपोर्ट दबो गवर्नमेंट माने से जेतळ को रिटायर करिवे 1000 टंका रे आउरी 1000 टंका से मिसई कर दबो. आपण 1000 टंका मंथली डिपॉजिट करचंदी गवर्नमेंट 1000 टंका मंथली डिपॉजिट करूची
तार माने मंथली 2000 टंका ईपीएफ रे डिपॉजिट होची आउ 12 मास रे तार 24000 हे गला 24000 ऊपर तार इंटरेस्ट दिया हबो त सेमती 24000 तार दरमा जते जते बढ़िबो सेही अनुसार तार बढ़ुथिबो ईपीएफ so that's why this is a very good scheme when after retirement he will get lot of money for his own survival or for his dependent तापरेला the payment of bonus act आपण माने समझ जानते बोनस दिया होची सब पीएसयू दोची प्राइवेट सेक्टर दोची टाटा बिरला डालमियास समस्त अंबानी अदानी समस्त दोचंदी ए बोनस टा प्राय दिया जाउची तंकर जदी प्रॉफिट बेसी हला ता डेफिनेटली बोनस दिया हबो और जदी प्रॉफिट नहीं बोनस देबेन सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज राइट डाउन द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आपण माने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कले भी सेया करिवे द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1985 ए एक्ट 1985 रे हला The objective of this act is to provide statutory obligation. Right on. The objective of this act is to provide statutory obligation for the payment of bonus to the employees in certain establishment on the bearing profit. जदि प्रॉफिट हबनी से बोनस दे परिवेनी सो आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन प्लीज नोट इट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट बने द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन for the payment of bonus to the employees in certain establishments on the bearing profit. It is here. The act applies to the establishments employing 20 or more persons on any day during a year during a year. The act also provides the payment of maximum and minimum bonus. The act also provides the payment of maximum and minimum bonus. Timely and non-eligibility to get bonus. केते लोक भी नॉन एलिजिबल थिबे जार दरमा अधिक आइथिबो से पाइबेनी बोनस. The act also provides the payment of maximum and minimum bonus and non-eligibility to get the bonus. Any employee who has worked at least 30 days, write down, any employee who has worked at least 30 days in accounting year in the establishment shall be eligible for bonus. Any employee who has worked at least 30 days in accounting year in the establishment shall be eligible for the bonus. So this is very important. Bonus Act 1985 रे हला जो माने any small scale industry or large scale industry or PSU or private sector industry, big industry जोठी 20 रु अधिक लोक काम करचंदी सेमान को बोनस दिया जीवो आ एलिजिबल हेबे लोकटा जदी गुटे पिला जॉइन कला आजी कंप्लीट कर देला 30 दिन गोटे मासर he is also eligible to get the bonus. अब जे कम करथिबो एक दिन गोटे दिन कम कले भी तक बोनस दिया हबन. नेक्स्ट हला द मिनिमम वेजेस एक्ट
The main objective of the act, write down the Minimum Wages Act 1948. 1948 ମସିହାରେ ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ଆକ୍ଟ ହେଲା ଏନବିସିଏଚ୍ କରାଗଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ. The main objective of the act, write down, note down please. The main objective of the act is to fix minimum wages in the specified industries and even in trading concern. Trading concern जदि अच्छी भी तादेर भी minimum wages रही बात है. And in trading concerns for the employees or workmen where labor organizations are non-existent and defunct. Where labor organizations are non-existent and defunct. The act covers all employees. ये सब एम्प्लॉय की कवर करूची मिनिमम वेजेस टा गोटे लोकर तो बंचिया को दरकार ना मिनिमम वेज. So the act covers all employees, skilled as well as unskilled, working in any type of establishment. से जो टाइप एस्टाब्लिशमेंट हो, ट्रेडिंग कंसर्न हो किंबा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो किंबा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो किंबा पब्लिक सेक्टर हो कि गवर्नमेंट सेक्टर हो, मिनिमम वेज दबा को बाध्य एम्प्लॉयर. So it covers all the departments, all the types of industries. Skilled हो कि unskilled हो, समस्त को पैसा देवा को पड़िबो तार मिनिमम वेज टा. The chief provision of the act envisages, write down, the chief provision of the act envisages determining and revising the minimum wages. Determining and revising the minimum wages and ensuring the right of the employees working in the organization. And ensuring the right of the employees working in the organization. It is chief provision. Continuously determine करहाबो और रिवाइज भी कराबो with the increase in price index. तांकर मिनिमम वेज टा रिवाइज कराबो. मने करा 5 वर्ष तळे जहा थिला ताकू एबे जदी मिनिमम वेजेस करिवो कि 10 वर्ष तळे जहा थिला जदी करिवो, it is detrimental to the livelihood of the workers and the employees. तेणु करी सब बेले सेटा डिटरमिन कराउची और रिवाइज कराउची आज पर द प्राइस इंडेक्स. 2 वर्ष थरे 3 वर्ष थरे कि 5 वर्ष थरे डेफिनेटली ताको मॉडिफाई करिया पड़ियो मिनिमम वेज को. तापरे आपण मन तो जीएसटी जानि चंदी, जीएसटी दिया होची. तापरे इनकम टैक्स भी आपण दउचंती. केते जगह रे हमर सेल्स टैक्स भी अदा कराउची ए जो पेट्रोल रे. तेणु दिस आर ऑल द acts. गोटे इंपोर्टेंट एक्ट आपण मानु कहि दउची सेटा इंपोर्टेंट, that is a negotiable instrument act. So that is related to banking. So write down, it has सब बळे पड़े परीक्षा रे negotiable instrument act. अब एटा आपण माने संबंध जानिबा कथा जानि थिबे भी प्राय मोस्टली negotiable instrument act. write down, negotiable instrument act is a very important act related to the negotiable documents commonly used in commercial transaction and monetary dealings. Commonly used in commercial transaction and monetary dealings. आपण माने चेक दउचंदी, ड्राफ्ट दउचंदी, ई सब दउचंदी. These are all negotiable instruments. Bills of payment, bills of exchange,
promissory note, checks, all these are known as negotiable instruments. Write down. Negotiable instrument means promissory note, bill of exchange, or check payable either to order or bearer. So what is this promissory note? Lekhi diyantu, promissory note. A promissory note is an unconditional written undertaking signed by the maker to pay a certain amount of money only to or to the order of certain persons or to the bearer of the instrument. This is promissory note. Bill of exchange is also like that. Bill of exchange is an instrument in writing. This is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a specific sum of money only to or to the order of a specific person. How kagu diya jibani se ta na joti jar likhai che takui paisa diya jibo. Specific person or to the bearer of the instrument. Apna check samaste lekhuchandi. Check is just like a bill of exchange drawn on a special field banker and not expressed to be payable otherwise on demand. To be clear, a check is a bill of exchange drawn by the specific bank payable on demand. In case of dishonor of check, remember this is an important clause. In case of dishonor of check, for insufficiency of the funds, drawee will liable to be punished with imprisonment. मानकर आपण गोटे चेक टे देइचंती आपण को गोटे चेक देइची गोटे कंपनी से आपण नेकरी ताको एनकैश कले बैंक रे आसिला जे इनसफिशिएंट कैश एई केस रे दैट शॉपकीपर विल बी जे आपण को देइची चेक टा he will be liable to be punished with imprisonment. खाली punishment तक वो करा बनी पैसा रे penalty रे, but he is liable to be in imprisonment. से तक imprisonment करा बनी माने जेल रे रही बसी. So these are the negotiable instruments. This is negotiable instrument act. It is applicable to bill of exchange, promissory note and check. So ame barsan padi dele amra legal instruments guda. Those are very important. Au barsan dekhiya je ko governmental institutions achandi जोटा कि small scale industry को legally help करूचंदी. Legal way. For example, DIC आपण मन को दउची गोटे EIN number, entrepreneur identification number. So that is being given by the DIC when you start a small scale industry. You are going to DIC for registration. So instead of registration nowadays it is they are giving one EIN number, entrepreneur identification number. That is important for all of the entrepreneurs to actually to the access of bank loan, electricity, SED, सबू से EIN नंबर को देखिकरी लोक माने देबे.
माने कम जो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से माने आपन को फैसिलिटी देवे विदाउट दैट EIN number you cannot get this subsidy or cannot get any incentive. Even it is very difficult to on your part to also utilize electricity without any EIN number. Don't EIN number that is a very important document for the people who are going for MSME units. So this is obtained from DIC. DIC is the authority. Second one is I have told you already in the first of all you have to go to the NSC or Panchayat or municipal corporation for NOC, no objection certificate, when you want to start any industry or factory in a particular locality. स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रू आपण गोटे आनिबे थर्ड रे गोटे सर्टिफिकेट आनिबे जे दिस इज नॉट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जति पॉल्यूशन होची दैट इज मैनेजेबल सो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट नाउ इट इज ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज lot of things have happened so in order to protect the people from this pollution so government has given a very comprehensive directive to all the departments to control the pollution. So any industry or factory which is going to be established in any locality, there is a provision that the particular entrepreneur has to obtain the license or this clearance certificate, pollution clearance certificate from state pollution control board. आपण माने देखुथिबे हमर आमे जो स्कूटर चलोचे मोटरसाइकिल चलोचे कार चलोचे ट्रक चलोचे सबो भी pollution control अंडर आसुचंदी हमर गोटे पर्टिकुलर मिनिमम रखाइछि जो मैक्सिमम रखाइछि जो तरे की आपण सेति की बाट pollution करी परिवे आउ ता ऊपर को जदी beyond that pollution is higher then you will be liable to be punished. So state pollution control board ru apna pollution control certificate ani paribe. Third one apna GST certificate tax local tax authorities ru ani paribe. Drugs jadi tiyari korthe pharmaceutical drugs drug controller ru apna anibe certificate license. Excise jinsa tiyari kale apna superintendent of central excise of the area to anibe. Manufacturing of fruit vegetable based products hele apna deputy director fruit and vegetable preservation ministry of agriculture government of India ru apna ani padibo. Food safety certificate jo FSSI se certificate anibe. तापरे registration of the unit under partnership hele partnership farm kale ताकू registration करिवे deed ताकू पार्टनरशिप डीड रे ताकू रजिस्ट्रेशन करिवे कोर्ट रे तापरे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले स्टेट लेवल टेक्निकल कमिटी अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज आपन को दबो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रे देन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रो आपन ISI मार्क पाइन की सर्टिफिकेट आनिवे ISI ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रो जे दिस प्रोडक्ट इज actually quality product so this is a quality certificate तेणु करी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ताकू दबो एक्सपोर्ट हेले आपण एक्सपोर्ट जदी करिवे आपण डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन रो आनिबे सर्टिफिकेट चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट रो आनिबे आ जदी एक्सपोर्ट करिवे आ उडे DGFT टू आनिबे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड रो आनिबे IEC कोड गोटे आनिबे import export code power connection पे कि अपन ग्रिड और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अप्लाई करिवे then registration under factories act करिया पे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को करिवे 100% export oriented unit in free trade zone सब जदी अपन इंडस्ट्रियल अप्रूवल पे कि
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पठेबे से पाइबे इंडस्ट्रीज यूजिंग वाटर एंड इन्वॉल्विंग एफ्लुएंट डिस्पोजल गैसियस वेस्ट्स अपन डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ टू एकु नेबे पब्लिक हेल्थ जदि फायर क्रैकर्स तैयारी करिवे जो बाण फाण जो एक्सप्लोजिव्स गुरा जोडा तैयारी होची बागर रे फुटुची किंबा दिवाली रे फुटौछ सेगुडा लाइसेंस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर कलेक्टर एंड एक्सप्लोजिव एक्ट रे कलेक्टर ठु आनिबे डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ठु आउ जदि आपण गवर्नमेंट ऑफिसेस को जोगेबे आपण गोटे रजिस्ट्रेशन करेबे आपण मानकर गोटे आपणकर अछि फैब्रिकेशन यूनिट जो अलमीरा फालमीरा तैयारी करछंती बेंच डेस्क तैयारी करछंती सेठू आपण जोगेबे जदि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट स्कूल को सब जोगेबे कि कॉलेज को जोगेबे कि कंपनी मन को जोगेबे सेठी कोन करिवे ना रजिस्ट्रेशन विथ डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल डीजीएसडी पाखरु सेटा रजिस्ट्रेशन करिवे आ नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन रू भी करि परिवे एनएसआई सो these are the important legal formalities to be adopted before actually starting the industries इंडस्ट्री स्टार्ट कला परे भी अपन जदि जो जो जिंस गुडा करि नथिबे ताकू आगु बढ़ेगिरी करिवे so this is very important legal formalities it must be adhered to otherwise sometime something may happen the entrepreneur may be put into jail or imprisonment so these are all legal requirements for starting industry for starting any type of industry these legal requirements are very much needed not that you can go safe without the registration of your units all these things with these particular government organizations so today now we'll discuss what is MSME Act that is also very important what is MSME Act MSME Act 9 माने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट এই আক্টটা আজি অক্টোবর 2 রে 2008 রে হেইতিলা সো আজি দিনরে সো রাইট ডাউন MSME Development Act was first of all implemented on October 2, 2008. समस्या मने रहिबो गांधी जयंती रे हेतिला on October 2, 2008. So this is related to the investment limit of small scale industrial undertakings. Small scale industrial undertakings or SSIs. Industrial undertakings of course sorry eta 2006 रे हेतला अक्टोबर 2 रे मु 2008 कहि देली so write down 2006 MSME Act 2006 रे हेतला write down first रे सेति बेले कोन हेतला ना तीनटा कैटेगरी रे विभक्त करा हेतला MSME की गोडेला माइक्रो आ गोडेला स्मॉल आ गोडेला मीडियम
आमे ताकू सेट पे कोचे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME तीनटा एटा 2006 रे प्रथम हेतला राइट डाउन MSMD Act was implemented in the year 2006 October 2 एटा तीनटा भागरे विभक्त कराइतला माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम पुणी एई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम को आउ दुईटा भागरे विभक्त कराइतला राइट डाउन दिस MSMEs have been divided into two parts manufacturing enterprises and service enterprises manufacturing enterprises and service enterprises एटा दीटा पार्ट रे विभक्त होइची एटाला मैन्युफैक्चरिंग सर्विस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और एटाला सर्विस एंटरप्राइजेस एटी कोन हला ना तांकू ए जो all these MSMEs are divided into two parts because those who are manufacturing the goods आमे ताकू कहूचे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माने करा के फैब्रिकेशन यूनिट करची के प्लास्टिक यूनिट तैयारी करूची प्लास्टिक के गारमेंट करूची जोडा मैन्युफैक्चरिंग होची जो तरे प्लांट एंड मशीनरी लागूची ताकू ताकू को जाउची मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर हला जो तरे आपण माने सर्विस जोगुचंदी माने करा आपण सर्विस जोगुचंदी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करूचंदी सो दैट इज ए सर्विस सेक्टर यूनिट होटल करूचंदी दैट इज ए सर्विस सेक्टर यूनिट गोटे टूरिज्म करूचंदी दैट इज ए सर्विस सेक्टर यूनिट जो थे सर्विस दिया होची सेही टाइम रे कोन हला ना तोळे फर्स्ट 2006 रे हला इन्वेस्टमेंट लिमिट माइक्रो स्केल पेंगी माइक्रो यूनिट पेंगी माइक्रो माने एकदम छोटा यूनिट ता ऊपर हला स्मॉल स्केल यूनिट ता ऊपर हला मीडियम स्केल यूनिट एकदम छोटा यूनिट पेंगी जोड़ा टाइनी बहुत छोटा up to 25 lakhs investment in plant and machinery right down micro unit रे आगुरु प्रथम रे 25 लाख टंका जाए थिला इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो यूनिट रे एनी यूनिट which invests money up to 25 lakhs in plant and machinery that is called micro unit similarly small scale unit रे कोन हला ना any unit which invests more than 25 lakhs and less than 5 crores that is called small scale manufacturing unit more than 25 lakh ଆଉ less than 5 कोटी हेले सेटाला small scale then medium scale सिमती more than 5 crores and up to 10 crore 5 कोटी रु अधिका आउ 10 कोटी रु कम हेले सेटा मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हेला in case of service units up to 10 lakhs मैन्युफैक्चरिंग हेले 25 लाख होतला सर्विस यूनिट रेला 10 लाख स्मॉल स्केल यूनिट रे सर्विस एंटरप्राइज हेले it should be more than 10 lakhs but less than 2 crore दी कोटी टंगा रु कम हेतिबो किन 10 लाख टंगा रु अधिक आइतिबो सर्विस यूनिट हेले माने गोटे लॉन्ड्री कल किबा गोटे कार आउ मोटरसाइकिल सर्विस स्टेशन कल जो सर्विस रिपेयरिंग होची 10 लाख रु बेसी 2 कोटी रु कम मीडियम स्केल हेला 2 कोटी रु बेसी सर्विस यूनिट रे 5 कोटी रु कम more than 2 crores in investment in plant and machinery and up to 5 crores
maximum होची 5 कोटी टंका. So this was the initial definition of MSME enterprises. किंतु वर्तमान कौन है ना जितोले कोविड है कोविड टाइम रे सीतारमण कौन कले ना चेंज कर देले सही टाइम रे आत्मनिर्भर भारत है आउ गोटे न्यू डेफिनेशन आसीगला एइटरे कौन है ना आउ किसी सेमती रखिलेनी माने ए डेफिनेशन अनुसार किसी भाग भाग कलेनी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कर देले पूरा से सर्विस यूनिट हो कि हमर रिवाइज डेफिनेशन रे एनी स्मॉल स्केल माइक्रो स्केल और मीडियम स्केल यूनिट हो. So please write down the revised definition of this MSME enterprises. Please write down. Write down investment in plant and machinery. Change है ये तरह का. सर्विस एंटरप्राइजेस माइक्रो स्केल ले 10 लाख थिला आगुरु वर्तमान जो चेंज हो गला क्राइटेरिया से मैंने चेंज कर दिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो राइट डाउन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज चेंज द क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग द स्मॉल स्केल MSME units enterprises MSME enterprises. In the changed criteria, both investment in plant and machinery and turnover, annual turnover item, both investment in plant and machinery and annual turnover of the unit or of the enterprise is taken into account. सेतरे खाली इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी निया होतला पुरुना रे किंतु नुआटा रे कोन हला ना एबे जो चेंज कर देले कोविड टाइम रे 2020 रे सेइथरे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नियाला आउ एनुअल टर्नओवर नियाला. एनुअल टर्नओवर केते से पर्टिकुलर यूनिट एनुअली प्रोड्यूस करूची एनुअल टर्नओवर केते टंकार मनकर आपनकर प्लास्टिक बोतल यूनिट अछि जोटा बटलिंग करूचंदी आपण प्लांट बटलिंग प्लांट से बोतल नै करी आपण कोन करूचंदी ना पानी पुरोचंदी कि कोका कोला पुरोचंदी कि आपनकर सेमती कोल्ड ड्रिंक करूचंदी निज ब्रांड रे से जो तार एनुअल टर्नओवर सेटा को से माने नेले केते टंकार करूचंती तेणु करी सेही अनुसार माइक्रो यूनिट के डेफिनेशन दिया है स्मॉल स्केल यूनिट रे डेफिनेशन दिया है और मीडियम स्केल यूनिट रे डेफिनेशन दिया है रिवाइज्ड डेफिनेशन रे. सो राइट डाउन in the revised definition the investment in plant and machinery
In case of manufacturing unit, is 1 crore. आगुरु 10 लक्ष थिला एकने 1 crore हे गला is 1 crore and annual turnover should be 5 crore. जो any micro industries whose annual turnover is 5 crore and investment in plant and machinery is 1 crore, it will be treated as a micro enterprise and all types of benefits will be given to micro enterprise. Similarly, for small scale manufacturing unit, investment limit is 10 crores, 10 koti, and annual turnover is 50 crore. Remember, as per the definition, annual turnover 50 koti, investment in plant and machinery 10 koti. It is a small scale unit. So any enterprise investing minimum 10 crores of rupees in plant and machinery with a turnover of 50 crores is treated as small scale industry, small scale enterprise. Then in case of medium scale enterprise, investment limit is very high. It is 50 crores. जदि गोटे मीडियम स्केल एंटरप्राइज जो माने करूथिबे एनी एंटरप्राइज जार इन्वेस्टमेंट भी 50 कोटी हे जाइथिबो आउ एनुअल टर्नओवर 250 कोटी थिबो 250 crores जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रो सेटा को आमे कहूचे मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज. So investment in plant and machinery 50 crores, annual turnover is 250 crores. So this is medium scale enterprise in manufacturing sector. Service sector रे कोन होची देखिबा. In service sector, any service enterprise which invests 10 crores of rupees, 10 lakhs of rupees in plant and machinery and write down, then it is called service unit. So this is a very important thing. एथरे कोन हेछि ना सर्विस यूनिट रे त आपनकर बेसी भी इन्वेस्टमेंट लागेनी आउ स्मॉल स्केल रे ता देउची 2 कोटी टंका इन्वेस्टमेंट करिया पड़िबा आपनको. जदि 2 कोटी टंका इन्वेस्टमेंट कले ताले आपनको स्मॉल स्केल सर्विस यूनिट हे परिबो. 5 कोटी टंका इन्वेस्टमेंट कले आपनकर मीडियम स्केल सर्विस यूनिट हे परिबो. So this is little changed right from the beginning. Beginning रे बहुत कम पैसा थिला, वर्तमान लोकंग हाथ को बहुत पैसा पळे आसीबो. से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो कि सर्विस यूनिट हो जो थरे आपण आपे आपे बढ़िया माने करी परिवे सब जिंस. तेणु करी स्मॉल स्केल एसएसआई यूनिट करंतु कि माइक्रो एंटरप्राइज करंतु कि
मीडियम स्केल एंटरप्राइज करंतु आपण करि परिबे कारण बहुत पैसा भी आसी जिवो हातकु इन दिस केस आ सब्सिडी भी भलो अछि ए केस रे तेणु करी these are all small scale industrial undertakings अबे वर्तमान कौन करिया ना टिके 5 मिनिट टिके नै जवा रेस्ट तापरे आ उठे क्लास अछि सेटा करिबा ओके टिके 2-3 मिनिट रेस्ट नै जाओ तापरे हमें पढ़ेबा हाउ टू स्टार्ट द एंटरप्राइज प्रमोशन ऑफ ए वेंचर एटा टिके बेसी इंपोर्टेंट केमती आपण स्टार्ट करिवे हला 2-3 मिनिट टिके रेस्ट नै जाओ बहुत समय बसिलनी ओके ओके सर Okay.
Okay, we'll start. Hello. Hello, everybody. Yes, sir. So, we'll start promotion of a venture. Uh, so the steps for establishing a new unit. This is very important. What are the steps? गोटे पर्टिकुलर इंडस्ट्री तैयारी करिया को हेले कौन स्टेप्स सब अछि को स्टेप देकरे हमको जिबा को पड़िबो लीगल रिक्वायरमेंट्स तो जानी देले वर्तमान सो देयर आर 21 स्टेप्स minimum. So first one is please write down. First step is determination to be self-employed. आपण माने वर्तमान जानी सारिबेनी जे वर्तमान जो पिला माने सब फॉरेन जाइथिले सब पळे आसले माने बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड मोस्ट ऑफ दी पर्सन्स केम बैक टू इंडिया जो माने पळे आसले से माने सब आसी के ठीक कोन करिवे दे वांट टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड दे आर डिटरमिन्ड टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड. So this is first step. The decision to take to be self-employed is a tough task. Mu self-employed hebi ki mu jaikri gote job karibi. So those people they already have experience. They have experienced that working for some other person is not beneficial to them. It is only beneficial to the particular employer. So they came back and started their own units. So when I was head of startup cell in IED, in the Odisha Startup Initiative, I have seen that during the year, just before the COVID, 2018-19, 462 startups have come up in Odisha. Actually, during those period, I knew that those people who have become entrepreneurs, they were most of the students in the age group of 24 to 26. They have just passed out and worked in Infosys or TCS or Capgemini or Accenture. Most of them came back and they started their unit
and nowadays they are all having millions of rupees. तांके पाखे बहुत टंका अछि वर्तमान most of them at least out of 462 major chunk is around 12 or 13 people. They have done very well in their venture. So decision to take the decision to be self-employed is a tough task, but it definitely yield results. So the first step is the most crucial step of the youth is to take this decision to be self-employed as an entrepreneur, as a job provider. When you will have to create the jobs being a self-employed person. आपण माने देखुचनी जदी गोटे लोकटा दुकान भी करूची गोटे शॉप भी करूची, even if it is a very small grocery shop, सेइथरे भी से दुईटा तीनटा लोक रखुची, दुईटा लोक मिनिमम रखुची, so he is giving employment. और जदी गोटे तमे small scale industry करिवो, definitely minimum 10 people तो रहिबे ना सेथिरे. Therefore decision to be self-employed is the first step. So write down, the first step is decision to be self-employed. Second one is analyzing your strength, weakness, opportunity and threats. हम जोटा को जे SWOT analysis, SWOT, SWOT analysis हमें तक पूछ. Analyzing strengths, weaknesses. S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunities, and T stands for threats. The potential entrepreneur has to always analyze his strength, weakness, opportunities, and threats. Suppose आपण चाहूँचंदी गोटे बटलिंग प्लांट करिए, प्लास्टिक बटल रे पानी बिक्री करिए, पानी वाटर बटल करिए. You know, you have money, but you don't have the people who have got technological knowledge about that. तम घरे नांती के नांती केमती को मशीन दरकार हबो. So that is a weakness. सेट कौन करिवे ना, आपण गोटे कंसल्टेंट को जदी यूज कर देले, he will tell you that whether this बोतलटा जोठी तैयारी हबो, एटा ब्लो मोल्डेड रे तैयारी हबो, ग्रेन्यूल्स रे ना इंजेक्शन मॉडल रे तैयारी हबो, मॉड्यूल रे तैयारी हबो. So this is they will tell you, and they will also help you in getting the machinery. So your weakness is eliminated. And there is a lot of opportunities for this bottle, water, filled bottle, water bottle has a very big utility. It is value added as mineral water. तेणु करिकी वाटर बॉटल सब बेले दरकार होची लोकंकर वर्तमान जे जुआडे जाउची वाटर बॉटल नउची आ लोक तो पिउ नांती बाहर पानी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. So there is opportunity, lot of opportunities, but there is a threat. SWOT. T होची म्हणजे threats means many people are going for this type of industry. प्राय समस्ते वाटर बॉटल करछन, छोटा बड़ा वाटर बॉटल. तेणु करी there is a lot of competition. So it is a threat. एते कंपटीशन हेले तमरा जदि भल क्वालिटी बटलटा ही नथिबो किंबा बटलटा बहुत एलडीपी रे करथो, लो डेंसिटी रे, हाई डेंसिटी रे करी नथिबो. ऑफ कोर्स बटलटा लो डेंसिटी रे हे परिबनी, केवल पॉलीपैक गुडा कहि परिबो. हाई डेंसिटी रे हेले भी तार भी गैस रहउची. देयरफॉर तेणु करी वाटरटा भी केमती को ब्रांड रो वाटर लोक बने नेबे सब पुराना ब्रांड रो वाटर नुआ ब्रांड कले भी. So that is a threat. Still then the water bottle will definitely click in the market. So
analyzing strength, weakness, opportunity and threats. Similarly आपण जो industry करी परिवे. So first one is decision to be self-employed. Second one is analyzing strength, weakness, opportunities and threats. Third step is आपण को जिनस करिवे सेटा करिया पड़िबो. तेनु करी you have to scan the environment. So the third step is scanning the business environment. आपण business environment टाको scan करिवे. पूरा environment scan करिवे. जे को जिनसटा मु करिवी. जो जिनसटा करिवी सेटा तार डिमांड अछि ना नाही मार्केट रे. तार सप्लाई अछि ना नाही मार्केट रे. सब देखिवे तार प्राइस केते. So scanning the environment is very important. It is always essential to scan the environment. So this is a step, very important step from the point of view of establishing any enterprise, whether it's micro enterprise, small scale enterprise or a large scale enterprise. तापरे आपण स्कैन कले आपण देखिया पाइबे जे कोन कोन पॉलिसी अछि गवर्नमेंट रो. व्हाट आर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, how much of subsidy you will get from the government, what are the incentives of the government, whether if you will start your factory or industry there is exemption of start of exemption of tax or not. If there is exemption of tax, how long it will take be there, वर्ष रहिबो कि 2 वर्ष रहिबो कि 5 वर्ष रहिबो कि 5 वर्ष परे आउ टैक्स exemption देबेनी. So these are the things, policies of the government, industrial policy of the government is to be also scanned. So environment scanning of business environment is a third step. The first step is decision to be self-employed. Second step is scanning of business environment. Third one is training. You have to take EDP training, entrepreneurship development training. Entrepreneurship development training बहुत ऑर्गेनाइजेशन दउची. हमर एठी इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट दउची. अहमदाबाद र ईडीआई भी दउची आसी एठी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. निस्बॉड भी दउची. समस्त एठी भुवनेश्वर दउचंदी. आईआईटी दउची, एनआईटी दउची, समस्त प्राय दउचंदी. सब बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन गुडा. तेणु करी आपण माने जतबे बाहर उची अप्लाई करि परिबे. इवन डीआईसी भी दउची एंटरप्रेन्योरशिप development program. So the fourth step is taking training. So if you take the training, you will get to know how to prepare the project report, how to approach the banker, who are the financial institutions which can give you loans, and you can also know many things about marketing, how to market your product. You can also know the production planning, how to plan the products. So therefore, this is training is a necessary factor. This is the necessary step. That is the fifth step. Fourth step in the starting or setting up small scale industrial unit. Then fifth step is write down product selection. आपण सी ट्रेनिंग रे भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करि परिबे. आपण फैब्रिकेशन यूनिट करिवे कि प्लास्टिक यूनिट करिवे कि गारमेंट यूनिट करिवे कि वाटर बॉटल करिवे कि केमिकल यूनिट करिवे कि आईटी यूनिट करिवे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रा. So that selection can be done as per your strength, weakness and opportunity and threats. Suppose you are a computer engineer or you are a mechanical engineer. You want to start a hardware computer unit, computer unit, or you are a computer engineer. You can go for IT software unit. So as per your strength, weakness, opportunity and threats. Even if you are not an engineer, you can start anything also. Even if you are a generalist, you can select a product
मनकर फूड प्रोडक्ट कले आपण वर्मिसेली तैयारी कले कि सोया पनीर तैयारी कले मशीन आनिले सोयाबीन आनिले तादर पनीर तैयारी कले सबु तक होटल माने नेले सो देयरफॉर प्रोडक्ट सिलेक्शन इज इंपोर्टेंट सो दैट इज द फोर्थ स्टेप जदि प्रोडक्ट सिलेक्शन टा ठीक करी कले आपणकर जानिले जे आपणकर कंपनी टा बढ़िया चलियो सो देयरफॉर दैट इज द फिफ्थ स्टेप सिक्स्थ स्टेप इज मार्केट सर्वे मनकर आपण 10टा प्रोडक्ट ठीक कले करिवे पाई की आइडिया जनरेट कले 10टा तादेर किंतु तार मार्केट सर्वे करिया को आपन को पड़ी जदी 10टा राइट स्लो स्लो प्लीज 10टा कले आपण को थरे जीरो इन करियो को प्रोडक्ट तारे सेटा इंपोर्टेंट आपण को प्रोडक्ट ता तैयारी करिवे तेणु करी आपण मार्केट सर्वे करिवे आपण मार्केट सर्वे न करिवे आपण करि परिबेनी यूनिट तैयारी so you will have to go for market survey of markets market survey न कले आपण जाई परिबेनी करि परिबेनी किछ so market survey remember is a systematic collection write down market survey implies systematic collection of data by the entrepreneur about the product for manufacture, demand and supply gap, extent of competition, केते competition होची, frequency of demand, ताकु लोक frequently demand करूचंती ना नहीं, frequency of demand, पैटर्न एंड डिजाइन ऑफ डिमांड को पैटर्न रे से माने नेबे बोली कि डिमांड करूचंदी आपण सर्वे करी सब जानिबे एंड डिजाइन ऑफ डिमांड इट्स पोटेंशियल शेयर इन द मार्केट प्राइसिंग मार्केट रे से प्रोडक्ट पोटेंशियल शेयर केते अछि व्हाट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी केमती करिवे अलगा लोक माने केमती करूचंदी सेही प्रोडक्ट जरी तैयारी करूचंदी सो दीज आर द थिंग्स इन द मार्केट सर्वे आई एम रिपीटिंग इट अगेन मार्केट सब लिखि दियो पूरा सेंटेंस मार्केट सर्वे इंप्लाइज सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा market survey implies systematic collection of data by the entrepreneur about the product for manufacture, about the product for manufacture, demand and supply gap, comma, extent of competition, frequency of demand, pattern and design of demand, its potential share in the pricing, market pricing, write down its potential share in the market pricing, distribution policy, etc. The principle is market surveyor. The principle is to produce what actually people demand. The principle is to produce what actually people demand.
So this is the sixth step. 1, 2, 3, 4, 5, 6 step. Seventh one is form of organization. Form of organization. आपण ऑर्गेनाइजेशन तो करिवे ना, आइदर यू विल गो फॉर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न. एकुडिया जदी कले आपण प्रोप्राइटरशिप कंसर्न करि परिवे, किंबा पार्टनरशिप रे करि परिवे, किंबा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रे करि परिवे, किंबा वन पर्सन कंपनी रे करि परिवे, किंबा एलएलपी रे करि परिवे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रे करि परिवे. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्रोप्राइटरशिप कंसर्न or public limited company or private limited company form रे भी करि परिवे. So this will depend upon the type, purpose and size of entrepreneur's business. The form of organization depends upon, like here, the form of organization depends upon the type, purpose or size of entrepreneur's business. One may also decide the form of business. One may also decide the form of business on the basis of resources at hand. केते resources आपण हाथ रे अछि, on the basis of resources at hand, or from the point of view of investment, or from the point of view of investment. Or from the point of view of investment. आपण इन्वेस्टमेंट देखि करी आपण करिवे, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न करिवे कि साइज ऑफ द फार्म देखिवे. बडे छोटा फार्म एकदम होबो, तादरे आपण पार्टनरशिप किबा प्रोप्राइटरशिप रे कर देबे. आ ठके बडा फार्म करिवे, इन्वेस्टमेंट अधिक आबो. तेनु करी आपण करि परिवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रे. So form of organization is very important. आपण कोन करूछथि. So always go for this private limited company, because private limited company रे बहुत benefit अछि. पार्टनरशिप कले कोन होछि ना, पार्टनरशिप रे आपण अनलिमिटेड लायबिलिटी. जदि भांगी गला आपनकर अटैच हे जीव, आपनकर घर पर सब अटैच हे जीव. All your private properties will be attached in case of partnership. But in case of private limited company, जदि कंपनी टा भांगिला, केवल आपनकर जति इन्वेस्टमेंट सेति गला, आउ ताठू अधिका जीव नाही. Only the investment component. Your private property will not be attached in case of private limited company or public limited company. That's why always go for this private limited company. Next one is, so 7 टा form of organization, write down. 8 टा location. Location तो आपण समझते जानी चंदी. The next step will be to decide the location where the unit is to be established. Locational advantage ପାଇଁ कि आपण यूनिट टा को लोकेशन रे कले भलो हबो, कोडी तार डिमांड बेसी अछि, कोठी रॉ मटेरियल्स अछि. लोक माने सिट पे पळे आछंदी ओडिसा, पोस्को पळे आस्तिला, जेएसडब्ल्यू वर्तमान करिवो, जेएसपीएल भी करूछंदी. सब प्राय because we have a lot of iron ore and chromites, तेणु करी कि एटा बेसी होउची. बंद कर सेटा या कम होउची. तेणु जेतु रॉ मटेरियल सेठी इजीली अवेलेबल हो जाउची, चीपली अवेलेबल होउची, आ लेबर सप्लाई इज आल्सो चीप. तेणु करी लोक माने एठी आसुचंदी. आ हमर actually Odisha is a state which is full of mineral resources and forest resources.
So there is every scope of starting any kind of enterprise here in Odisha, and labor supply is also cheap. किंतु आमे कौन करछे ना आमे निजे करूनी. This is a great irony that we are not doing, but people from different states they come over to Odisha and they start their industries. कलिंग नगर तो प्राय समस्ते बाहर टाटा बिरला डालमिया देन रोहित फिर वाला बहुत प्रकार अच्छी. सो सबु आडे प्राय मैक्सिमम होचंदी नॉन ओडियास करि परुचंदी. आमे so if we want to have our own small scale industries to be established in Odisha, so we can get lot of benefits also. Raw materials पाइबा, cheap labor supply पाइबा, आमे भी ओडिया लोक अभी तक भलो भाई मार्केट करि परिबा. Of course nowadays things have changed. आमे सब बेले चाहूतिले जे कि जॉब करिबा, चाकरी करिबा. So वर्तमान सेटा चेंज हे जाइछि. लोक माने प्राय people are now oriented towards doing business. आम ओडिसा लोक भी. So therefore locational advantage is very important. जोठी सब आपण रॉ मटेरियल सप्लाई थिबो, लैंड मिली जाउथिबो इजीली, इलेक्ट्रिसिटी मिलु थिबो, सेमती जगह रे ठीक टाइम लोकेशन देखि करी आपण करिवे. सो लोकेशनल एडवांटेज इज द 8th फैक्टर माने 8th स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज टेक्नोलॉजी. राइट डाउन. 9th step is technology. To manufacture any item, machine is required, technology is required. So information on all available technologies should be collected by the entrepreneur. Entrepreneur should collect all the information about the technology. नले से केमिति करिवो गोटे यूनिट बसेइबो जदी तार इंस्टॉल्ड कैपेसिटी केते जानि नथिबो, से को कंपनी रा जानि नथिबो, मशीन टा तार प्राइस केते जानि नथिबो, तार परफॉर्मेंस कोन जानि नथिबो. So it would be very difficult on the part of the entrepreneur to start the unit. So our technology therefore is the 9th step. Information on all the details of the technology is to be collected by the entrepreneur himself. This will be useful to determine the type of machinery and equipment to be installed. Next one is machinery and equipment. खाली टेक्नोलॉजी टा आनिले हबनी. टेक्नोलॉजी तो विभिन्न प्रकार रे आसुची. जो मशीन और टूल्स आनिबो सेटा भी important. So this is the 10th step, machinery and equipment. आउ थरे मु रिकैपिचुलेट करै दोछि त आपन मानकु. फर्स्ट हला डिसीजन टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, कारण एटा परीक्षा पड़िबो. सेकंड वन हला analysis of strength, weakness, opportunity and threat. Third one is scanning of the business environment. Fourth one is training. Fifth one is product selection. Sixth one is market survey. Seventh one is form of organization. Eighth one is location. Ninth one is technology. So to manufacture any item, हमें technology टा निहाती यूज करूचे. 10th one is machinery and equipment and tools. So having chosen having selected the technology, the machinery and equipment required to be chosen. Suppliers have to identify the particular machinery and equipment which the entrepreneur has ordered. Their cost is also to be estimated by the supplier first, and the entrepreneur has to assess whether this machine with this cost is a really good machine or not, it is worth taking or not for the particular region. Suppose गोटे जगह रे खाली मनकर आपण भुवनेश्वर करिवे, सेठी इलेक्ट्रिसिटी अछि. बर्तमान आपण मनकर अडसपुरे कले कि नियाळी रे कले, सेठी इलेक्ट्रिसिटी सबबेले रहिबनी.
सेठी आपणकर अलगा मेसिन लागिवो डीजी सेट लागिवो तेणु करी खाली जदी इलेक्ट्रिक मेसिन नहीं खाली इलेक्ट्रिक रे चलिवो आउ डीजी सेट रे चलिवनी तार नथिवो फिटिंग्स ताले हबनी तेणु करी आपन को सेमती मेसिन बाछिया को पड़िबो आपन को लोकेशन रे करचंदी से लोकेशन को अडैप्टेबल हबो ना नहीं पर्टिकुलर मेसिन if the machine is adaptable to the particular location that machine is to be chosen by the entrepreneur so that is important similarly equipments are to be collected for the machines it has to be procured from outside town state or country लोक माने भी जदी फॉरेन मेक जिंस आणुचंदी बेसी दिन रहिबो सेन भी फॉरेन मेक रा जिंस आणुचंदी एठी कोन करचंदी ना संबलपुरी पाट जो माने तयारी करचंदी कि बरगड रे पाट जो माने तयारी करचंदी आई हैव सीन सेठी कोन हिचदा से माने लोकल मशीनरी यूज करचंदी आउ बाहर भी पंजाब रु मशीन किणी कि आनी भी यूज करचंदी so there are two types of machineries being used by these handloom weavers प्राय handloom weavers पुरा निजे लोकली बेसी प्रेफर करूचंदी तकर लोकल मशीनरी और इक्विपमेंट को कारण सेटा भागी गले से संग संगे ताकू रिपेयर कर दउचंदी किंतु मन करे आपण पंजाब रु आनिबे कि हरियाणा रु आनिबे ताकू लगेबे एठी लोक नाहंती ताकू फिट करिया को बहुत कम लोक आपण पुणी गोटे लोक को खोजिबे आउ तांकर भी आफ्टर सेल सर्विस नहीं हियर इन ओडिसा सो दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम फॉर देम तेणु करी से माने मोस्टली लोकल जो बांध करूचंदी ये करूचंदी सब लोकली यूज्ड मशीन और टूल्स रे करूचंदी सो देयरफॉर मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स आर वेरी इंपोर्टेंट दैट इज द 10th स्टेप सो 11th स्टेप इज ये सबू जानी गले बर्तमान प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करिवे पैसा पाई फाइनेंस आनिबे सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन इज द 11th step after deciding the form of ownership location technology machinery and equipment the entrepreneur should be ready to prepare his project report or feasibility study the economic viability write down in the project report the economic viability and the technical feasibility of the product selected the economic viability and the technical feasibility of the product selected to be established as an industry must be taken into account. A project report that may now be prepared will be helpful in formulating right down, helpful in formulating the production, marketing, financial and management plans. Write down, पूरा लिखी दिया. It will be helpful in formulating the production, marketing, financial and management plans. पूरा कर देबो सेटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट रे आपन प्रोडक्शन प्लान कर देबे मार्केटिंग प्लान कर देबे फाइनेंशियल प्लान कर देबे एई अनुसार मु प्लानिंग करूची आ मैनेजमेंट केमती करिवे केते लोक रखिबे केमती मैनेज करिवे केते सेल्स फोर्स रहिबे सो मैनेजमेंट प्लान भी कर देबे इट विल आल्सो बी यूजफुल इन ऑब्टेनिंग फाइनेंस सो द प्रोजेक्ट रिपोर्ट र मेन जिंस हला इट शुड बी अ बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट
bankable जोटा कि फाइनेंस ऑब्टेन करि परिबो आपन यूनिट की कारण आपनकर मनेकर कोटी टंगार यूनिट धर एकदम माइक्रो स्केल रे आपन पाखरे अछि 20 लाख कि 30 लाख टंका आपन तो 80 लाख टंका पुणी आनिबे ना लोन तेणु करी सेटा बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेतबो जोटा कि फिजिबल हेतबो दैट्स व्हाई you should take into consideration all the aspects of the production aspect, marketing aspect, financial aspect, management aspect of the project report. It will be helpful in obtaining finance, आपनकर shed, power connection, water connection, raw materials, quota, everything. Project report will take care of everything. तापरे कौन होची ना next step is 12th step right down project report preparation परे ताको अप्रेज करा जिवो प्रोजेक्ट ताको अप्रेज करा जिवो प्रोजेक्ट अप्रेजल ordinarily project appraisal implies the assessment of a project. प्रोजेक्ट असेसमेंट करा हबो प्रोजेक्ट अप्रेजल जे करंदी देयर इज अ प्रोजेक्ट अप्रेजल फर्म बैंक वाला भी प्रोजेक्ट अप्रेज करंदी कंसल्टेंट्स माने प्रोजेक्ट अप्रेज करंदी आपण गोटे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर देले गोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट को देले से अप्रेज करिवो ताकू फाइनेंशियल अप्रोचलटा से दबो गोटे टेक्निकल कंसल्टेंट को देले से टेक्निकल अप्रेजलटा दबो गोटे मार्केटिंग कंसल्टेंट को देले से गोटे मार्केट अप्रेजल दबो सो देयर आर ऑफिसेस डीआईस की देले से माने भी अप्रोच कर देबे अप्रेज कर देबे सो देयरफॉर द प्रोजेक्ट अप्रेजल इज वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ feasibility study of the report. Write down a project which is selected should be technically feasible and economically viable so that it can be bankable. So that it can be bankable. Bankable माने पैसा आपन को मिलिबो. So that it can be bankable. For this, the following appraisals can be performed. For this, the following appraisals can be performed. First is economic appraisal. A lekha. A economic appraisal. B financial appraisal. C technical appraisal. D management appraisal. E organizational appraisal. F operational appraisal. Operational appraisal. G market appraisal. So ये सब appraisal करा हबो. So this is the 12th step. तापरे 13th step ता लेखो तेरेटा 13 टा लेखो 13th step. Sir, हाँ yes. sir, what is the difference between economic appraisal and financial appraisal? Economic appraisal means when you are doing when you are establishing a factory or industry, you will have to see the scale of operation, economic size. So that is economic appraisal. Scale of operation means when your particular industry is small, that is small scale. When your particular industry is micro, that is micro scale. So that is done on the basis of size of the particular plant. How many
what is the plant, how many people will be actually employed, how many technical people will be employed, how many skilled people will be employed, how many unskilled people will be employed. That is economic size. You will have to see the economic size. That is scale of operation. We are telling that scale of operation. What is the total annual turnover of the particular industry? So on the basis of this, economic appraisal is being done. But in case of financial appraisal, what amount of money will be actually invested for purchasing the machinery? What amount of money will be actually invested for the sales force employment? And what is the amount of money to be invested in case of raw materials? All this. So finance is different from economics. Economics related to the size of the firm. Remember, the scale of the firm. Whereas finance is the money which is to be put into working capital or fixed capital investment. Size of the firm देखिए अपन finance पुरेबे माने केते बड़ साइज रा आपण करिवे केते टंका देकरी मशीन किनिवे. That is financial appraisal. Okay, is it clear? Yes, sir. बुझी परले तो इकोनॉमिक साइज आउ इकोनॉमिक Yes, sir, अप्रेजल got it. आउ Got it, फाइनेंशियल sir. अप्रेजल. Yes. So 13th हैला finance सबुठ important जिंस finance. Finance is the lifeblood of an enterprise. Finance is the lifeblood of an enterprise. Entrepreneur has to take steps and follow specified norms of the financial institutions. आपण जो बैंक को जिबे से बैंक आपण को लोन दबो की तंगर स्पेसिफाइड नॉर्म्स अछि. एई नॉर्म को क्राइटेरिया को फुलफिल कले आमे बैंकर कहबे आमे लोन दबो. समाने फॉलो करंती गोटे रूल को. सपोज आपण डाउन पेमेंट देबे 20% डाउन पेमेंट देले आपण को 80% पेमेंट हबो. मानकर लक्षे टंका रो आपण गोटे माइक्रो स्केल रे यूनिट करिवे. आपण पाखरे 20,000 टंका अछि आपण 80,000 टंका आनी बैंक रु तेणु करी 20,000 टंका आपणकर अछि से देखिबे. आपण से 20,000 टंकाटा रखिबे बैंक रे आज मिनिमम डाउन पेमेंट तापर आपण लक्षे टंका पाइ जिबे आराम रे. सो दैट इज देयर नॉर्म. आपण मिनिमम डाउन पेमेंट देवा को पड़िबो नले देबेनी बैंक वाला. So therefore, so specified no सब बैंक रो अलग अलग नॉर्म. आपण SBI रो जा नॉर्म सेटा UBI रो नॉर्म रे सब बैंक रो इंटरेस्ट रेट भी अलग. आउ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जोटा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की दउची तार भी इंटरेस्ट रेट अलग. से केवल 50 लाख ऊपर को लोन दबो. जो आउ 50 लाख तळ को आपण जब ताको देबे यूनिट रो प्रोजेक्ट कॉस्ट से दबनी. Therefore, there is difference. So finance, आपण जदि small scale industry करिवे, आपण schematic loan नहीं परिवे. Financial assistance can be given through PMEGP loans, Prime Minister's Employment Generation Program, Mudra Yojana, Stand Up India. एई थ्री आपण नहीं परिवे पैसा finance for this capital investment. आउ आपण माने venture capitalists मानकटू भी लोन नहीं परिवे जदि startup करिवे. If you want to have a startup, you can approach the angel investors, venture capitalists to give you loan initially in the early stage of your startup. So most of the startups are being given finance through angel investors and venture capitalists and less through banks. Bank वाला प्रथम रे दियंतिनी लोन. तेणु करी angel investment स्टर मानगठु नियंती और वेंचर कैपिटलिस्ट माने दियंती. So venture firms are there nowadays. They can give you if your project is
very innovative project, you can take equity from the venture capitalists. So 13 is the finance. Next one is write down technical know-how. Technical know-how 15 टा टेक्निकल नो-हाउ माने टेक्निकल लोक जोटा कि आपनको इंडस्ट्री की दरकार हम जदी. So in some cases technical know-how may be arranged by DIC. आपण मेसिन टा बसैबे DIC रु लोक आनी परिबे से बसै देबे मेशिन because DIC is a government organization. आपण अल्प पैसा पेमेंट कले से माने आनी करी दे देबे. Even sometimes they also send their managers, technical managers, free of cost to install your machinery. Facilities are also available for small scale industries for making technical know-how arrangements from the government agencies like IED, ADI, NSIC वाला भी बसे देवे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन. तेणुक टेक्निकल नो हाउ तुम आपन जदि बेसी बड़ टेक्नोलॉजी थिबो गोटे टेक्निकल पर्सन निहाती दरकार जे कि बसेबा पई आपन मशीन की इंस्टॉल करिया पई मशीन गुडा बड़ बड़ मशीन ताको इंस्टॉल करिया पई टेक्निकल नो हाउ दरकार. इवन जो मशीन सप्लायर से भी लोक आनिकरी बसै दे पारिबो. मशीन मैन्युफैक्चरर से भी आनिकरी मशीन बसै दे पारिबो आपन जदि ताको अप्रोच करिवे. सो नेक्स्ट वन इज पावर एंड वाटर कनेक्शन. पावर एंड वाटर कनेक्शन पूर्वरु आपन गोटे EIN नंबर नवाक पड़ियो मु कहिछि एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम द DIC. दिस इज जस्ट लाइक ए पासपोर्ट for entry into manufacturing world. So आपण EIN नंबर थिबो आपण पावर एंड वाटर कनेक्शन पाइगी आपण ग्रिड की लिखि परिबे आ वाटर पाइगी आपण PhD की लिखि परिबे से आपण को जोगे देबे. So that is the next important step, 15th step. Next one is installment of machinery. मशीन किनिले ताको इंस्टॉल करिवे. So I have already told you have to make the layout of the plant जोठी रखिवे मशीन टा ताको इंस्टॉल करिवे तार इंस्टॉल कैपेसिटी देखिवे तार गोटे लेआउट तयारी करिवे कोठी मशीन रहइबो को पर्टिकुलर जगह रे मशीन रहइबो. So that is very important जोडा कि पाखरे आपण ग्रिड रखिवे स्टेशन करिकरी ग्रिड रो आनिबे आपण मशीन की पावर सप्लाई पावर लाइन और पावर चैनल तापरे आपण डीसी सेट कोठी रखिवे सेटा आपण को देखिया को पड़िबो. सो पावर एंड वाटर कनेक्शन इज द वाटर भी सेमती कनेक्ट करिवे केमती सब जगह को राइटली आसी परियो वाटर नाले गोटे जगह बंद हो जाउतो आ गोटे जगह रे आसीबनी एमती नुहे सब बेले सब फ्रीक्वेंटली वाटर आसी पड़थिबो. सो देयरफॉर पावर एंड वाटर कनेक्शन इज a must. That is the next step. Installation of machinery is the next step. तापरेला recruitment of manpower. Manpower recruitment is very important. That is an important step. Write down. Manpower recruitment. आमर तो टाइम सरी आसुची शीघ्र लेख. गोटे manpower माने सेमी स्किल्ड रखि परिबा स्किल्ड रखि परिबा आउ एकदम पूरा हाई एंड रे टेक्निकल पर्सन रखि परियो जो माने मैनेजर रहिबे. सो वी कैन गेट इट फ्रॉम द ओपन मार्केट आउ जो माने हाई एंड थिबे वी कैन मेक इट कैंपस ड्राइव. कैंपस रु भी हमें आनी परिबा सब इंजीनियरिंग कॉलेज रु किबा IITI रु सब नहीं एस्पिरिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज रु विदाउट मेकिंग मच हैसल्स इन द एडवर्टाइजमेंट. आउ जदि मिलिलानी आम एडवर्टाइजमेंट करिया को बाध्य करिकरी रिक्रुटमेंट करिबा.
So recruitment of manpower is very important. Entrepreneurs should khali recruitment kale habani. Entrepreneurs should see that whether these people are adaptable to the particular environment or not. Also, the entrepreneur has to arrange training for them. Taku training the organize karibo training, so that they will be very much comfortable in handling the machinery and equipments. Next one is sigra tike lekhantu procurement of raw materials. Raw materials apanଙ୍କର ଦରକାର, ତାକୁ ବି procure କରିବେ. So ଆପଣ ଖୋଜିବେ, you will have to explore the cheap supply of raw materials. ମନେକର ଆପଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ, ତାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ବିକ୍ରି କରିବେ, ଟର୍ମେରିକ ପାଉଡର କରିକି. ସେ ଯୋଉ ଟର୍ମେରିକ ପାଉଡର କରିବେ, ଟର୍ମେରିକ ବେଶୀ ମିଳୁଛି କନ୍ଧମାଳରେ. ଆପଣ କନ୍ଧମାଳରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହଉଛି. ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସିଜନରେ ଆଣିବେ କି ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେବେ 3 ମାସ ଆଗରୁ କି 4 ମାସ ଆଗରୁ, so that you will get it at a very cheap price. So there should be regular supply of raw materials to the machinery. ଆଉ ଯଦି ମଝିରେ halt ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର production ଯେତିକି କରିଥିବେ ତାର loss ବେଶୀ ହେଇଯିବ. So there should be regular supply of raw materials, and raw materials should be cheaply available, so that your product, when you value add the product, when it is be value added after grinding it, packaging it, then putting it for market through transportation, everything is value added. So if there is no regular supply of raw material, then you cannot make the supply chain perfect. So the supply chain of the raw material should be perfect. So this is the next procurement of raw material is the next step. Then the next best step is production. ଆପଣ ଯେତେବେଳେ production କରିବେ, production, right on production, you should see that first of all you should go for the trial production. प्रथमे trial production करिवे, so that you will know whether the product is widely accepted or not. मनकर आपण ट्रायल प्रोडक्शन करके छाड़िले, से प्रोडक्ट रे कोन गोटे माने डिफेक्ट बाहरिला, इट इज डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ताको पुनी आपण चेंज कर देले, मॉडिफाई कर देले, मॉडिफाई करी मार्केट को छाड़ले. जदि 80% लोक कि 70% लोक ताको नौचंदी, योर्स इज ए गुड प्रोडक्ट, तापरे आपण पूरा कमर्शियल प्रोडक्शन करिवे. जदि 20% लोक नेले, आपण ताको मॉडिफाई करिवे कमर्शियल प्रोडक्शन पाई. सो कि बेसी पब्लिसिटी करिवे, मार्केटिंग अग्रेसिव करिवे. सो दैट इज द थिंग. टेस्ट मार्केटिंग therefore is important. So the next thing is marketing. Next step टाला marketing, production परे. Marketing रे गोटे टेस्ट मार्केटिंग आपण करिवे, गोटे टेस्ट स्टेज मु जोडा कहली, टेस्टिंग करिवे आपनकर प्रोडक्ट, whether it is quality product or not quality product. Quality product हेले एडा मार्केट रे थ्राइव करिवो आपण जानि देले. तेणु करी आपण प्रोडक्ट को कमर्शियल प्रोडक्शन कले, आउ कमर्शियलाइज करके आपण बिक्री कले, एडवर्टाइजमेंट कले, पब्लिसिटी कले, ट्रांसपोर्ट रे पठैले, सबआडे पठैले, सो टेरिटोरी डिवाइस कर देले. So therefore this marketing is also very important. Kintu mind it, always there should be test marketing. After that there is commercial marketing. Next one is quality. से प्रोडक्ट रे क्वालिटी assurance देबे, आपण ISI मार्क देबे. जदि आपणकर हेथिवो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट तादिरे ISI मार्क देबे. ISI मार्क पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को जिबे, ताको अप्लाई करिवे, प्रोटोटाइप देगिरी से आपण गोटे ISI मार्क दबो. जदि आपणकर फूड प्रोडक्ट से थो FSSAI की जिबे, FSSAI की जिबे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन को. आउ जदि आगमार्क को जिबे, जदि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हेथो आगमार्क देबे ता दिरे. सो क्वालिटी assurance is the next step, quality assurance. Next one is EIN number or आपण गोटे UAN number आनिबे. UAN उद्योग आधार नंबर, सेटा मिनिस्ट्री ऑफ
MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दउची उद्योग आधार नंबर आपण यूनिट की रजिस्टर करिवे सेटु गोटे UAN परमानेंट नंबर आनिबे उद्योग आधार नंबर से नंबर टा आसी गले आपण बेनिफिट सब पाइ जिवे सब्सिडी पाइ जिवे प्रोडक्शन कर दीचन तो सब्सिडी पाइ जिवे माने गवर्नमेंट रु 10% सब्सिडी मिलिया कथा आपण टर्नओवर ऊपर आपण पाइ गले कैपिटल लिंक्ड इन्वेस्टमेंट सब्सिडी पाइ जिवे कैपिटल लिंक्ड इन्वेस्टमेंट सब्सिडी माने आपणकर कैपिटल मानेकर आपण इन्वेस्टमेंट करथिबे 10 लाख टंका सब्सिडी मानेकर 20% ताजेरे 10 लाख रे आपण 2 लाख टंका आराम रे पाइ गले सब्सिडी सो फॉर दिस इट इज रिक्वायर्ड नेक्स्ट वन इज मार्केट रिसर्च करिवे आउरी कोन कोन प्रोडक्ट तैयार करिवे नेक्स्ट इंपोर्टेंट स्टेप और लास्ट स्टेप है प्रॉफिट जनरेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्लीज रिमेंबर आपण सब प्रॉफिट जनरेट होची ना नहीं देखिए थ्रू कांस्टेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी मार्केटिंग you have to calculate the turnover and how much returns you are getting from the investment ROI that is the profit returns on investment ROI write down R capital O capital I ROI return on investment on the basis of that आपण calculate करिवे आपणकर profit gross profit आसिला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टैक्स जाले जीएसटी देबे इनकम टैक्स देबे सो कॉर्पोरेट टैक्स देबे सो जीएसटी माइनस टैक्स इज द नेट प्रॉफिट जहां नेट प्रॉफिट हेले आपण ताकू रिजनरेशन करिवे सो इट इज वेरी सिंपल कारण आपण गोटे फील्ड रे थिबा प्रोडक्ट को मनकर आपण गोटे फूड प्रोसेसिंग करूछन अटा तयारी करके पैकेट करके बिक्री करूछथि गहम फील्ड रे होची तार किछि माने लो वैल्यू रहउची घरे आनी करी खाली काटी करी जदी खाइबे पूरा लो वैल्यू रहउची जेतबेले ताको कट कर देले कट करके खळा को आनिले हार्वेस्ट कले तार टिके वैल्यू हायर हे गला ताको पैकेट कर देले माने या भीतर पुरै देले बस्ता भीतर पुरै देले सेटा पैकेट हे गला सो तार टिके हाई वैल्यू हे गला ताकू नहीं गले मेसिन रे पुरी देले अट्टा करी देले अट्टा जेतबेले करी देले अट्टा देर मिसै देले सब प्रोटीन जिंस सब मिसै देले आउरी सब मिसै करी अट्टा कर देले जेतबेले अट्टा टिके आउरी हाई वैल्यू हे गला वैल्यू एडेड हे गला तापरे ताकू सब 2 केजी क्या पैकेट कले करके ताकू ट्रांसपोर्ट रे पठैले सेट के आई आउ हाई वैल्यू हे गला बिकॉज़ जोटा फील्ड रे थिला से तळे हाई पैकेट रे पसी गला आ से पैकेट रो से तळे रुटी किबा पाव रुटी हे गिरी जाकरी टेबल ऊपर रहिला से आउरी वैल्यू एडेड हे गला सो द प्रॉफिट विल बी देयर जतबळे ताकू आपण माने से लोकंग टेबल ऊपर को जाउची सो देयरफॉर you see how much value is added one after another. So value addition is important for profit generation. So anything is done that is on the basis of this value addition method. So profit regeneration है अपन ताको reinvest कले बिक्री करी. So thank you all for your patience. Totally 1 hour plus 1 hour 2 hours class. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.